In previous videos, we discussed starting from traces, theory of traces, then friction, then it was belt friction, then center of gravity, expression for CG, moment of inertia, expression of moment of inertia, all were the questions which were asked in exams. Today we will discuss things regarding theoretical part of work power energy. This is normally asked in question number 11th or 12th and is part of 6th unit. Now what work done is nothing but product of magnitude of force and displacement in the direction of force. Now when we say product of magnitude of force and displacement in the direction of force, if this is force F acting on a block of mass m, and if it displaces this block through distance s, then work done by this force is F into s. As far as यूनिट्स आर कंसर्न, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, इस न्यूटन मीटर को बोलेंगे जूल, फोर्स का डाइन, डिस्टेंस का सेंटीमीटर, इसको अपन बोलेंगे अर्क. So what work done is? Work done is product of magnitude of force and displacement in the direction of force. It is a scalar quantity. Now this is what, when force acts on a body, it produces linear motion. उसी तरह when torque acts on the body, it produces angular motion, and therefore angular work done is product of magnitude of torque and angular displacement in the direction of torque. Product of magnitude of torque और angular displacement in the direction of torque क्या होगा? तो angular work done. Angular work done भी scalar quantity है, उसका भी unit वही है, joule as well as erg. Unit of angular work done is also joule as well as erg. Now the second part that comes out is energy. Now how we define energy? Energy is capacity of a body to perform work. किसी भी बॉडी की वर्क परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी है उसको अपन बोलते हैं एनर्जी. एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द बॉडी या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क. Unit of energies are same as that of work, joule as well as erg. Energy is also a scalar quantity. Now basically we classify energies into two categories. There are number of different forms of energy. Now what different forms of energy are? Mechanical energy, then you have electrical energy, then there is chemical energy, then solar energy, wind energy. Out of that we basically require mechanical energy, which is of two types. One is kinetic energy and the second is potential energy. The energy possessed by body by virtue of motion is called as kinetic energy. किसी भी बॉडी की एनर्जी जो possess होती by virtue of motion of that body is called as kinetic energy. Kinetic energy is always half of mv square. Now since kinetic energy is nothing but a form of energy, इसलिए उसके भी यूनिट जूल as well as erg होंगे. Now this is what linear kinetic energy is. अगर angular kinetic energy चाहिए तो mass के जगह आएगा mass moment of inertia और linear velocity के जगह आएगी angular velocity I omega square. Kinetic energy is nothing but energy possessed by body by virtue of motion. It is always half mv square. Unit होंगे joule as well as erg. Kinetic energy भी scalar quantity होगी. जबकि पोटेंशियल एनर्जी जब अपन बोलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी possessed by body by virtue of its position. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज mgh. इसके भी यूनिट जूल एज वेल एज अर्ग होंगे. What potential energy is? Energy possessed by body by virtue of position is nothing but potential energy. Now there are basically two types of energies that we discussed, which are types of mechanical energy. एक बार क्वेश्चन आया था what are different types of mechanical energy. So there are two types of mechanical energy, kinetic energy as well as potential. Kinetic energy linear भी हो सकती है जो अपन नॉर्मली हाफ mv स्क्वायर रहती है, और दूसरी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी रहती है जो है हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर. Potential energy was energy possessed by body by virtue of position. The last part of definition is power. Power is nothing but capacity या rate at which work is done. Work done per unit time is nothing but power. As far as work done is concerned, work done है force into displacement upon time. Force displacement upon time क्या होता है? Velocity. तो power is also product of force applied on the body and the velocity of that body. Unit of power is either joule per second. Joule per second को ही watt बोलते हैं,
Yeah, it is nothing but arc per second. So the rate at which work is done is nothing but power. Power is also product of force and velocity. Unit क्या होगा, तो या तो जूल पर सेकंड और it will be watt. Again unit क्या होगा, तो it will be nothing but the unit of power will be या तो जूल पर सेकंड जिसको अपन watt बोल रहे हैं या arc per second. Power is nothing but capacity of a body to perform work. Now after definitions of work done, energy and power, we will switch to the basic equation which is asked of. हर वक्त लगभग 3 में से 2 पेपर में जो डेरिवेशन रहता है that is nothing but work energy equation. Derive work energy equation. ये इक्वेशन 2 चीज़ों के लिए रहता है, या तो लीनियर मोशन अगर 3 मार्क के लिए रहता है तो, और 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के रहता है तो 2 तरह से रहता है, फिर लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. बहुत सी बार सिर्फ वर्क एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए आता है, लीनियर एज वेल एज रोटेशनल. वी विल डिस्कस फॉर फर्स्ट लीनियर एंड देन फॉर रोटेशनल. सो लीनियर के लिए डिस्कस करते हैं. वी स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस. कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m which when applied with external force F changes its position. उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो s इज द डिस्प्लेसमेंट. इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v और टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो t. व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज, कोई एक ब्लॉक लेते हैं ऑफ मास m जिसको f इतना फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होती है u से v तक. डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो s. टाइम कितना है, तो t. वी नो बाय न्यूटन सेकंड लॉ. अगर न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma. अपने को इंटरेस्ट है वर्क डन में. वर्क डन क्या होता, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर भी डिस्प्लेसमेंट. बट व्हाट वी नो इज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज v dv by ds. अगर एक्सेलरेशन v dv by ds रहता है तो a इंटू ds क्या होगा, तो v इंटू dv. अगर a इंटू ds v dv है तो f इंटू ds will be nothing but mv dv. Let us integrate this. On integrating, what we will have is on one side it is f into ds and on the other side mv dv. इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल 0 से लेकर s तक. f कांस्टेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो f इज कांस्टेंट. ds का इंटीग्रल s 0 से s तक. m कांस्टेंट v स्क्वायर बाय 2 u से लेकर v तक. This is f into s. This is mv square by 2 minus mu square by 2. Force into displacement is work done. This is half of mv square and a final kinetic energy, half of mu square and initial kinetic energy, and therefore work done is always change in kinetic energy. स्टार्ट कहाँ से किया, कोई एक ब्लॉक लिया ऑफ मास m, उसको f इतना फोर्स लगाने के बाद इट चेंजेस इट्स डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t by changing velocity u to v. न्यूटन सेकंड लॉ से f इज इक्वल टू ma है. दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन a को क्या लिख सकते हैं, तो v dv by ds. a ds को रिप्लेस किया v dv से. फाइनली टू गेट वर्क डन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो डेरिवेशन था ये कौन से फॉर्मेट में था, तो लीनियर मोशन के लिए. इसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए कैसे चेंज होगा और हाउ थिंग्स चेंजेस ऑफ, लेट अस डिस्कस दैट पार्ट आल्सो. Now so as to start with, what we say is in case of rotational motion, Newton's second law becomes F के जगह T, A के जगह M के जगह I और A के जगह अल्फा. We'll consider a rotating body changing its velocity from initial angular velocity to final angular velocity in time duration T. Now T is nothing but the torque applied and I is mass moment of inertia. देखो T है torque applied, I क्या है तो mass moment of inertia, अल्फा क्या है तो angular acceleration. दोनों तरफ अपन छोटी डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से मल्टीप्लाई करते. I into अल्फा, T I as it is, अल्फा के साथ डी थीटा. बट what we know is जैसे ए वी डी वी बाई डी एस था वैसे ही अल्फा क्या होगा, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. ये अल्फा इंटू डी थीटा की वैल्यू बन जाती ओमेगा इंटू डी ओमेगा. ये दोनों वैल्यूज पुट करते, एक तरफ टी इंटू डी थीटा वैसे का वैसे और दूसरी तरफ आई ओमेगा डी ओमेगा.
वैसे इंटीग्रेट करते टी इंटू डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से थीटा तक, आई ओमेगा डी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 से ओमेगा तक, टी कांस्टेंट, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा 0 से थीटा तक, आई कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 0 से ओमेगा तक, this is t into theta, this is I omega square by 2 minus I omega 0 square by 2, ये क्या है तो एंगुलर वर्क डन, और ये क्या है तो चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अगर रोटेशनल मोशन के लिए आता है तो t इक्वल टू आई अल्फा से शुरू करेंगे, लीनियर के लिए आता है तो f इक्वल टू एम ए से शुरू करेंगे, वहाँ ds से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ वर्क डन वाज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हियर angular work done is change in angular kinetic energy। बस इतनी थियरी अगर करते हैं तो these are theoretical question of near about 4 to 6 marks for question number 11 either or 12 somewhere। Tomorrow in next video we will be having theory part of impulse and momentum। Before we conclude of इसको खत्म करने से पहले कभी कभार एक स्टेटमेंट आ जाता है that is law of conservation of energy, and we know what law of conservation of energy is। Energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form। Total amount of energy in the universe always remains constant provided there has to be no atomic reaction। या सीधा सीधा ऐसा भी बोल दिया कि law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form। इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स है यू कैन फील फ्री टू आस्क मी और इन द कमेंट ऑफ द चैनल, या फिर यू कैन जस्ट इवन आस्क ऑन माय नंबर्स। थैंक यू।